Hi, everybody. It's really good to be here. Thank you so much, Mr. Mike. So it was a pleasure to listen to Dr. Kalpana and her presentation. You muted yourself, Bakash. Oh, yeah, there I go. Okay, मेरे को बहुत अच्छा लगा मैं डॉक्टर कल्पना का मैंने आज ये प्रेजेंटेशन देखा. I really enjoyed listening to some of the things that she said, and it really got me thinking as she was talking. तो ये जब बात कर रहे थे मैं भी काफी चीज आपको सोचने लगा मैं. She presented a lot of problems, a lot of difficulties that people are going through. उन्होंने बहुत कुछ हमें ये दिखाया कि लोग क्या क्या प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं. And I'm lucky because I get to present some solutions. मैं बहुत लकी लगता हूँ क्योंकि मैं आपको कुछ सॉल्यूशन बताना चाहता हूँ या फिर कुछ बताने जा रहा हूँ. So I'm going to go ahead and share my screen. मैं अभी स्क्रीन आपको शेयर करूंगा. Can you see my screen now? Oh, yes. Okay, so I want to go through these slides a little bit quickly because you've seen a lot of this stuff already. मैं थोड़ा सा जल्दी इस स्लाइड के ऊपर मैं जाना चाहता हूँ. आपने ये सब स्लाइड बहुत बार देखा होगा शायद. But I want to point out that, as Dr. Kalpana said, diabetes is a huge problem in India. जैसे कल्पना जी ने बताया, मैं भी वही चीज आपको दोहराना चाहता हूँ कि भारत में डायबिटीज से बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है. She mentioned that 60% of the world's diabetic population is in Asia. That's mostly China and India. ये 60% के ऊपर जैसे डॉक्टर कल्पना ने जो बताया जो डायबिटीज पॉपुलेशन भारत में है. She mentioned that right now we have 72 million diabetics in India, and in 10 years we're going to have 500 million. उन्होंने जैसे अभी आपको बताया था कि 72 मिलियन लोग भारत में हैं और वो बढ़ के 2020 से 2030 में 500 मिलियन होने वाले हैं. These are incredibly scary statistics. ये एक बहुत बड़ा डरावना नंबर्स हैं. And I'm going to talk a little bit about why, which Dr. Kalpana also talked about. मैं अभी क्यों के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ जैसे डॉक्टर कल्पना जी ने भी बताया. Remember at the end of her presentation, Dr. Kalpana said, don't drink your fruit. जैसे अभी आपको कल्पना जी ने बताया अभी जब उनका प्रेजेंटेशन खत्म हुआ था उन्होंने बताया कि अपने फ्रूट को जूस में मत पीना. जूस मत पीना, फ्रूट जूस मत पीना. The reason she said don't drink your fruit is because when you juice a fruit, you lose all the fiber. तो उन्होंने इससे बताया कि जब आप उसको फ्रूट को आप जब जूस बनाते हो तो उसका जो फाइबर है वो पूरा खत्म हो जाता है. And this is what happens to blood sugar and blood insulin when you take out the fiber. तो यही चीज वैसी होता है जब आप फाइबर निकाल देते हो तो वैसी आपको चीज होता है हमारे ब्लड उसमें. You can see this chart right here that I'm highlighting shows what happens to blood sugar, an orange versus orange juice. तो मैंने आपको जैसे आप हाईलाइट दिखा रहा हूँ एक डॉट दिखा रहा हूँ आपको ऑरेंज या ऑरेंज जूस के हिसाब से डिफरेंस में कितना ब्लड ग्लूकोज का शुगर हमारे बॉडी में होता है. There's a drop in blood sugar. ये आपको नीचे आ जाता है हमारे ब्लड शुगर. That's because of the fiber that the actual fruit contains that the juice does not. क्योंकि उसमें जो फाइबर होता है वर्सेस जो हम लोग जो जूस पीते हैं उसमें फाइबर नहीं होता है. And look at what happens to the insulin. Look at the dramatic drop in insulin levels. आप देखो इंसुलिन लेवल कितना नीचे गिरा हुआ है. When we have elevated levels of insulin all the time, that's what causes problems. जब हमारा इंसुलिन हर एक वक्त आपको बढ़ा हुआ होता है तभी जाके हमें प्रॉब्लम होते हैं. So Dr. Kalpana mentioned 70% of the Indian diet comes from carbohydrates. जैसे उन्होंने बताया कि 70% हमारा आपको कार्बोहाइड्रेट हमें खाने से आता है. And when we're eating carbohydrates that are low in fiber, we have high levels of insulin all the time. तो हम लोग उस तरह का अगर हम कार्बोहाइड्रेट आपको खाते हैं तो हमारा इंसुलिन भी बहुत हाई रहता है आपको मोस्ट ऑफ द टाइम. These chronic high levels of insulin are what's leading to the dramatic rise in diabetes. यही चीज हमें डायबिटीज को बहुत आपको ये जो डायबिटीज आपको जो बढ़ता है ये उसका एक मुख्य कारण होता है. In the US, we don't eat a lot of high fiber foods. यूएस में हम लोग ज्यादा हाई फाइबर फूड नहीं खाते हैं.
This is something that's common around the world. We don't really like the way fiber tastes. हम लोग नॉर्मली पूरे संसार में हमें ये चीज अच्छा नहीं लगता है कि भैया फाइबर कैसे टेस्ट करता है. We eat white bread because we don't like fiber. हम लोग व्हाइट ब्रेड ज्यादा खाते हैं क्योंकि हमें फाइबर पसंद नहीं है. We grow our vegetables to be sugary and juicy and less fibrous because we don't like the way fiber tastes. हम लोग जब हम सब्जियां उगाते हैं तो उसमें हम मीठापन ज्यादा चाहते हैं लेकिन फाइबर हमें कम चाहिए क्योंकि वो हमें फाइबर का टेस्ट हमें पसंद नहीं आता है. In the US, one of our main sources of fiber is pizza and French fries. हमारे यूएस में तो सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज से. This is not because pizza and French fries contain a lot of fiber. आपको ऐसा नहीं है कि भैया पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज में बहुत सारा फाइबर होता है. This is because we eat a lot of pizza and a lot of French fries. क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा पिज्जा और बहुत ज्यादा अपना फ्रेंच फ्राइज खाते हैं. That's why in the US we have an obesity problem. उसी की वजह से हमारे यूएस में ओबेसिटी मतलब मोटापा का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. That's why in the US we have a diabetes problem. क्योंकि इसी की वजह से आपके यूएस में डायबिटीज भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. Because we eat a lot of low fiber, high fat junk carbs. हम लोग यहाँ पे अभी जैसे डॉक्टर साहब अपना माइक ने बताया हाई कार्ब्स मतलब हाई ये जो ऐसा चीज ऐसे खाते हैं जिससे डायबिटीज बहुत ज्यादा होता है. Now, I've never actually been to India. I was supposed to go and I didn't end up getting to go. मैं भारत एक्चुअली आ रहा था अभी कोई कारण की वजह से आपको आ नहीं पाया. But I love Indian food. लेकिन मेरे को भारतीय खाना मेरे को बहुत पसंद है. When I look at this array of Indian snacks, it looks delicious. जब मैं ये जो पिक्चर को मैं देखता हूँ इतने सारे आपको अलग अलग वैरायटी खाने का ये बहुत मतलब ये बहुत लुभावना होता है. बहुत अच्छा लगता है. But it's like Dr. Kalpana was saying, when you eat nothing but carbohydrates all day long, your insulin level is high all the time. अभी जैसे डॉक्टर कल्पना जी ने बताया था कि आप खाली जाता सुबह से लेकर शाम तक आप खाली कार्बोहाइड्रेट भरा चीज अगर खाते हो तो आपका वो लेवल बढ़ना ही है. शुगर का लेवल तो बढ़ना ही है. And when your insulin level is high all the time, you end up getting problems like diabetes. तो जब आपका आपका इंसुलिन लेवल अगर दिन भर अगर बढ़ा हुआ होता है तो आपको डायबिटीज जैसा रोग होना ही मतलब आपको हो जाता है. I was reading an interesting study about snacking in India. मैं एक स्टडी पढ़ रहा था स्नैकिंग के बारे में भारत में. Snacking in India is starting to replace meals. हम लोग जो खाते रहते हैं जो कुछ न कुछ खाते रहते हैं ये जो हम लोग जो रेगुलर जो जैसे ब्रेकफास्ट लंच हम डिनर खाते हैं शायद उसको भी रिप्लेस करेगा. 60% of adults in India prefer to eat many small meals throughout the day rather than a few larger ones. करीबन 60% भारतीय लोगों को ये जो छुट-पुट हम कुछ न कुछ खाते रहते हैं ऐसे छोटा-मोटा छोटा मील्स उनको वो पसंद है ना कि ये जो बड़ा-बड़ा जो मील्स खाते हैं एक ब्रेकफास्ट एक लंच एक डिनर. So we're eating small meals throughout the day that are very high in carbohydrates. तो आज हम मतलब अगर वो लोग अगर छोटा-छोटा खा रहे हैं खाना खा रहे हैं जो कार्बोहाइड्रेट से बहुत ज्यादा है तो बहुत प्रॉब्लम है फिर. This is one of the main reasons why we expect diabetes cases to go up from 72 million to 500 million in 10 years. ये भी एक मुख्य कारण है भारत में कि हम 72 मिलियन से 500 मिलियन भारत में हम 10 साल में पहुंचने का वो आंकड़ा लग रहा है क्योंकि हमारे खाने का तरीका भी वैसे हो रहा है. There are study after study after study that show the effect of dietary fiber on our diets. हम लोग हमारे अगर इसमें देखें तो बहुत सारा स्टडी के ऊपर स्टडी आपको है पड़ा हुआ है कि हमारे डाइटरी फाइबर हमारे डाइट के ऊपर कितना अच्छा इम्पैक्ट करता है. It is very well established that dietary fiber is beneficial for insulin control. अभी ये आपको ये स्टडी हो चुका है और ये लोगों को आपको चल चुका है कि डाइटरी फाइबर हमारे बॉडी के ऊपर जिनको डायबिटीज है उनका बहुत अच्छा असर होता है. All I have to do is eat an orange instead of orange juice, and I already get a significant benefit as far as insulin control.
आपको एक ही चीज करना है, मान लीजिए हम अगर संतरा खाते हैं तो संतरा जूस नहीं पी के संतरा एज अ फ्रूट खाना है, तो आपको ज्यादातर अपने इंसुलिन कंट्रोल वहां से भी होता है। So, what happens if I take a scientifically designed fiber supplement? तो अब हम अगर क्या होता है कि हम अगर साइंटिफिकली डिजाइन सप्लीमेंट खाते हैं तो Unicity Balance is a unique, scientifically designed, intelligently designed product. ये यूनिसिटी बैलेंस एक बहुत बेहतरीन इंटेलिजेंटली डिजाइन किया हुआ गया प्रोडक्ट है। People talk about Unicity Balance and say, oh, it's a great fiber supplement. यूनिसिटी बैलेंस बहुत बार आपको लोग बात करते हैं, यार ये तो एक फाइबर सप्लीमेंट है। But Unicity Balance is not just a fiber product. ये खाली एक फाइबर प्रोडक्ट ही नहीं है यूनिसिटी बैलेंस। In Unicity Balance, we have a unique biosphere fiber matrix. हमारे इस यूनिसिटी बैलेंस में बहुत यूनिक प्रकार का बायोस्फीयर फाइबर मैट्रिक्स है। So, what is different about this fiber matrix? मतलब इसमें अलग क्या है, इस फाइबर मैट्रिक्स में अलग क्या है? It's not just a single fiber. ये एक सिंपल फाइबर नहीं है। It is a blend of fibers put together specifically to help your body control glucose. ये बहुत स्पेसिफिकली तरह से बनाया हुआ एक फाइबर मैट्रिक्स है। इसका ऑब्जेक्टिव एक ही रहता है कि आपके ब्लड शुगर, आपका जो ग्लूकोज है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। Unicity Balance also contains B vitamins and chromium. ये आपको बी विटामिन जो क्रोमियम है वो भी आपको कंटेन करता है। The B vitamins are great for energy. They're well known for impacting cellular energy. ये बी विटामिन से ये आपको एनर्जी को बढ़ाने में आपको बहुत बड़ा आपको कार्य है इसका। But we've also found that they're specifically important as far as helping control blood sugar level when taken with fiber. हम लोगों ने इसको ये भी आपको देखा है कि इसका इम्पैक्ट जब हम फाइबर के साथ मिला के खाते हैं तो ये ग्लूकोज को ब्लड ग्लूकोज को कम करने में बहुत कारगर है। Chromium is a critically important trace element. क्रोमियम में बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेस एलिमेंट है। It's something that our body needs in order to restore insulin sensitivity. ये एक ऐसा चीज है जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को दोबारा रेस्टोर करने में इसका बहुत बड़ा कार्य होता है। So it's a Unicity Balance is a blend of scientifically designed fibers. तो यूनिसिटी बैलेंस एक साइंटिफिकली डिजाइन फाइबर है। इसमें सब कुछ अभी जैसे अभी आपको बताया ये सारा आपको मिश्रण है। Combined with vitamins and minerals. इसमें विटामिन्स और मिनरल्स भी है। There's one other interesting, cool ingredient. इसमें आपको और एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। So we have carbonate in Unicity Balance. हम लोग कार्बोनेट से यूनिसिटी बैलेंस में। And what is carbonate? ये कार्बोनेट होता क्या है? Carbonate is a special mineral or a special base actually. When you mix it with acid, it bubbles. ये एक ऐसा चीज है, ये एक बेस है जो हम एसिड के साथ मिक्स करते तो ये बबल होता है। And in our stomach, there's a lot of acid. हमारे पेट में बहुत सारा एसिड होता है। If you were to take a normal fiber supplement, आप अगर एक नॉर्मल फाइबर सप्लीमेंट लेते हैं, it would hit your stomach and it would form a ball of fiber. ये आपको जब स्टमक में लेते हैं तो आपका बॉल ऑफ फाइबर बन जाता है। I don't know how many of you are into cooking at home. मेरे को ये पता नहीं कि आप लोग कितने लोग खाना घर में बनाते हो। But if you put a starch like cornstarch or even flour into a hot stew, what happens? आप अगर आपको गर्म पानी में आप अगर आटा या फिर कॉर्न स्टार्च डालते हो तो क्या होता है? It immediately forms clumps and balls. तो ये इमीडिएट आपको एकदम पूरा आपको सिकुड़ सा जाता है। There's no surface area there. It's not helping anything. It doesn't thicken the broth. तो ये आपको जो भी चीज है वहां पे मतलब वो उसको थिक नहीं करता है। So at Unicity, we designed something clever. हमने यूनिवर्सिटी में कुछ हट के कुछ बनाया है। We mixed our fiber supplement, our fiber backbone with carbonate. हमने क्या किया यहाँ पे, हमने जो फाइबर बैकबोन है हमने उसको कार्बोनेट के साथ मिक्स किया है। And when it hits our stomach, the carbonate starts to bubble. और जब हम पेट में जब जाता है तो ये जो कार्बोनेट्स वो बबल होने लगता है। That allows the fiber to expand. वो फाइबर को क्या करता है, एक्सपैंड करने में मदद करता है।
so that it fills our stomach more. और उसी की रिजल्ट ये है कि हमारे पेट फूला फूला सा लगता है। So that it does a better job of absorbing glucose. तो और आपको उससे और भी अच्छा काम ये होता है कि ब्लड ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने में बहुत बड़ा आपको काम होता है इसका। So that we also feel full longer. तो हमें इसी के हिसाब से हमें जो पेट फूला फूला बहुत लंबे समय तक लगता है। Unicity Balance is part of our patented BioSlife line of products. ये हमारा एक पैटेंटेड फॉर्मुलेशन है जो हमारे बायोस लाइफ फैमिली के अंदर मौजूद है। As I said, it's scientifically designed, and because of that, it's unique. ये एक यूनिक है और एक साइंटिफिकली डिजाइन प्रोडक्ट है हम लोग का, मतलब हम लोग के पास। Unicity Balance is listed in the PDR. ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पीडीआर में भी लिस्टेड है। That means that it is trusted by physicians. इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत भरोसेमंद प्रोडक्ट है, इवन डॉक्टर्स के भी, फिजिशियंस के भी। More than any of our other products, Unicity Balance and the BioSlife line is scientifically validated and studied. ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम लोग का जो बायोस लाइफ जो लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे, ये बहुत बड़ा एक ऐसा चीज है जो बहुत बार स्टडीड हुआ है बहुत सारी आपको यूनिवर्सिटीज में। So the University of Sydney is a very well-known university. यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी एक बहुत बड़ा नामी गिरामी यूनिवर्सिटी है। They were the ones that actually invented the glycemic index. ये एक ऐसे आपको ये यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ऐसी कि जिन्होंने ग्लाइसेमिक इंडेक्स को इन्वेंट किया हुआ है, ये आपको इन्वेंट किए थे। And they studied Unicity Balance to see what its effect was. तो इन्होंने हमारे यूनिवर्सिटी बैलेंस को स्टडी किया है। And it turns out that when you eat sugar or bread, you get a large insulin spike, a large blood sugar spike. तो आप ऐसा ब्रेड ये सब कुछ खाते हो तो इंसुलिन स्पाइक बहुत बड़ा दिखता है। But when you use Unicity Balance before you eat the bread, you get much less of a blood sugar spike. अब यही चीज आप अगर यूनिवर्सिटी बैलेंस खा के पहले लेके उसके बाद आप अगर ब्रेड खाते हो तो आपका जो स्पाइक है वो बहुत कम होता है। You also get a significant drop in overall insulin levels. आपके इंसुलिन लेवल में भी आपको मतलब बहुत कम आपको बढ़ता है ये। This plays a dramatic role in our metabolic health ये एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है हमारे मेटाबॉलिक हेल्थ पे। because when we have less of a blood sugar spike and less of an insulin spike, जब ये ब्लड ग्लूकोज और फिर इंसुलिन स्पाइक ज्यादा नहीं बढ़ता है then our bodies are exposed to less sugar. तो हमारे जो बॉडी है शुगर के ऊपर आपको एक्सपोज बहुत कम रहता है। And we're also preventing our body from getting insulin overload. और उसी के माध्यम से हम अगर देखें तो हमारे बॉडी इंसुलिन ओवरलोड नहीं होता है। Another study that was done by a place called Diabetes in Control. और एक स्टडी आपको वो जो जगह का नाम है डायबिटीज इन कंट्रोल में किया गया था। They were looking at Unicity Balance and what it does to parameters associated with diabetes and blood lipid problems. ये ऐसे देख रहे थे कि भैया डायबिटीज और ब्लड के प्रॉब्लम्स में हिसाब में मतलब क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। They were able to show significant reductions in blood sugar levels. इन्होंने भी ब्लड शुगर लेवल पे काफी हद तक कंट्रोल या कम या आपको इन्होंने रिपोर्ट किया है। This is blood sugar levels over time after 90 days of using product. ये जो अभी जो नंबर देख रहे हैं जो 90 दिन तक उन्होंने हमारे जो बैलेंस खाने के बाद में ये इनका जो रिजल्ट दिखाई दिया है। They were also able to show significant reductions in cholesterol levels. या इनको जो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर भी बहुत कम आपको जो कंट्रोल या फिर बहुत इसका जो कोलेस्ट्रॉल जो कम हुआ वो भी इन्होंने रिपोर्ट किया है। So Unicity Balance is what I like to call metabolic health insurance. मैं तो इसको यूनिवर्सिटी बैलेंस को आपको इस नजरिया से भी आपको बताता हूँ, ये एक मेटाबॉलिक हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट भी है। I've been doing a lot of these meetings over Zoom right now because of the coronavirus. मैं इस तरह के मीटिंग को अपने जूम से बहुत सारे लोगों के साथ में कर रहा हूँ अभी बिकॉज ये कोरोना वायरस की वजह से।
And the senior vice president of sales, Clayton Barton, has come up with the saying, now more than ever. अभी हमारे जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर क्लिंटन बार्टन अभी ये कह रहे हैं कि नाउ मोर देन एवर, तो मतलब अभी आपको अभी ये चीज करना पहले से भी बहुत जरूरी है. And the reason why he's saying that is because Unicity is more important now than ever. उनका कहना ये इसलिए क्योंकि अभी भी जरूरी है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स यूनिवर्सिटी के जितने प्रोडक्ट्स हैं पहले से अभी इसकी जरूरत और भी बढ़ गई है. When you look at things like diabetes and heart disease, आप कभी भी अगर डायबिटीज और हार्ट डिजीज के बारे में आप अगर देखते हैं तो they're a problem on their own. They're a ये एक terrible problem. ये एक बहुत टेरिबल प्रॉब्लम है अपने आप में भी. But they also significantly increase your risk for certain types of infections. ये खाली अपने बारे में नहीं, इस इनके बदौलत हमें और कोई कोई आपको और चीज के इन्फेक्शंस भी होने के बहुत बड़े चांसेस होते हैं. I was talking with another member of the USAB, the Unicity Science Advisory Board, Dr. Bickman. मैं इसी के बारे में डॉक्टर बिकमैन के साथ बात कर रहा था जो यूनिवर्सिटी साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड से हैं. And he was telling me about some of the studies that he's read where diabetes and heart disease significantly contribute to mortality rates from not just COVID-19, but other infections like flu and pneumonia. तो मैं जब बिकमैन साहब से मैं बात करता हूँ, उन्होंने ये बताया कि ये जो दो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो इश्यूज हैं हमारे, जो डायबिटीज हो गई या फिर हार्ट आपको प्रॉब्लम, मृत्यु के बहुत बड़े कारण है अपने अभी ये जो कोविड जो चल रहा है उससे भी बढ़ के. So we see people around us that are sick. मतलब हम हमारे आसपास देखते हैं कि लोग बीमार हैं. And I'm not talking about COVID-19 sick, I'm talking about diabetes sick. मैं कोविड-19 बीमारी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डायबिटीज बीमारी के बारे में बात कर रहा हूँ. I'm talking about people that have problems with metabolic syndrome. मैं उन लोग के बारे में बात कर रहा हूँ जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम से पीड़ित है अभी. I'm talking about people that have poor metabolic health. मैं उन लोग के बारे में बात कर रहा हूँ जिनके बहुत पुअर मेटाबॉलिक हेल्थ है. We know enough that we should be able to help many people. हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम बहुत सारे लोगों को मदद कर सकते हैं. Unicity Balance on its own is metabolic health insurance. ये यूनिवर्सिटी बैलेंस अपने आप में भी एक मेटाबॉलिक हेल्थ इंश्योरेंस है. We should all be using it. हम सभी को ये प्रोडक्ट यूज करने चाहिए. We should all make sure our friends and family are using it. हम ये चीज भी हमें आपको ये देखना चाहिए कि हम ही नहीं, हमारे परिवार, हमारे दोस्त, हम सब लोग ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए. Because we know if they are using it, they'll be healthier. क्योंकि हमें ये पता है कि अगर वो ये प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हेल्दी रहेंगे. Now I'm going to talk about Unicity Life Fiber. अब मैं थोड़ी सी देर आपके साथ यूनिवर्सिटी लाइफ फाइबर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. This is actually one of my personal favorite products. ये मेरा एक ऐसा बहुत प्रिय प्रोडक्ट है. I use Life Fiber every day. मैं लाइफ फाइबर रोज लेता हूँ. I also use Balance every day. मैं बैलेंस रोज लेता हूँ. And the reason why I do this, so मैं इससे लेता हूँ ये Dr. दोनों. Kalpana was talking about how much fiber we need. डॉक्टर कल्पना आपको ये बता रहे थे कि हमें कितना फाइबर लेना चाहिए डेली. I'm not perfect with my diet. मैं अपने डाइट को लेकर कितना परफेक्ट नहीं हूँ. She said 25 to 40 grams of fiber a day is ideal. तो वो बता रहे थे कि 25 से 40 ग्राम फाइबर आपको डेली लेना चाहिए एवरेज एवरीडे रोज का. I've written down everything that I've eaten and seen how much fiber I eat. मैंने लिख के रखा है कि मैं एवरेज कितना फाइबर लेता हूँ. And I don't get anywhere near 40 grams of fiber in a day. और मैं कभी भी उस 40 ग्राम के आसपास मेरा कभी फाइबर नहीं होता है. So now I take my Unicity Balance, my Life Fiber. मैं अभी मेरा जो यूनिवर्सिटी बैलेंस है और लाइफ फाइबर है मैं लेता हूँ. Because I know I'm not good enough on my own with my diet. क्योंकि मेरे को पता है कि मैं जो रोजमर्रा की मैं जो खाना खाता हूँ उसमें मेरे को जितना फाइबर आपको खाना चाहिए मेरे को उतना मैं नहीं खाता हूँ, और या फिर मेरे उतना मेरे को नहीं मिलता है. So what is Life Fiber? तो ये लाइफ फाइबर आपको होता क्या है फिर है क्या? One of the key ingredients in Life Fiber is psyllium husk. सबसे मुख्य इसके जो इंग्रेडिएंट है वो है सिलियम हस्क.
Psyllium husk is an interesting mix of about 70% soluble fiber, 30% insoluble fiber. ये जो सीलियम हस्क है करीबन 70% सॉल्युबल फाइबर है और करीबन 30% इनसॉल्युबल फाइबर है And it has a profound effect on gut health. और इसके बहुत बड़ा इफेक्ट होता है हमारे गट हेल्थ के ऊपर में Psyllium husk on its own is incredibly effective at treating constipation. सीलियम हस्क अकेला ही काफी है बहुत बड़ा इसका कारगर काम करता है हमारे क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम में It has been shown to reduce symptoms of irritable bowel syndrome. इसके ये भी रिजल्ट है कि इरिटेबल बाउल सिम्टम जो हम आईबीएस बोलते हैं इसके ऊपर भी बहुत बड़ा आपको इसका रिजल्ट देखा गया है Psyllium husk on its own has some effect on blood glucose and blood lipid control. ये सीलियम हस्क ही आपको एक इसको ये भी देखा गया है कि ग्लूकोज लेवल इसको कम करने का भी इसका एक बहुत बड़ा एक मुख्य कारण है अपना ये सीलियम हस्क से ही But like other Unicity products, Life Fiber is more than just psyllium husk. जैसे बाकी हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट्स हैं हमारे और भी प्रोडक्ट्स के से इससे भी बहुत आपको बड़ी बड़ी चीज है Life Fiber also contains other soluble fiber sources. हमारे इसमें लाइफ फाइबर और भी बहुत सारे सॉल्युबल सोर्सेज हैं It contains inulin and citrus pectin. इसमें इनुलिन और सिट्रोस्पेक्टिन है It also contains a significant amount of botanicals that are healthy for digestion. इसमें बहुत सारे हेल्दी बोटैनिकल्स हैं जो हमारे डाइजेशन के ऊपर बहुत बड़ा काम करता है And the blend of soluble fibers and healthy botanicals और ये जो ब्लेंड है सॉल्युबल हेल्दी सॉल्युबल और ये जो हेल्दी बोटैनिकल्स के is designed to be a superfood for healthy bacteria in our gut. ये इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये बहुत कोई अच्छे बैक्टीरिया सुपर फूड बने हमारे इसको गट को लेके मतलब गट में So Life Fiber is a great microbiome product. तो लाइफ फाइबर ये बहुत जबरदस्त माइक्रोबायोम प्रोडक्ट है It contains a significant amount of fiber-based prebiotics that are food for the good bacteria in our gut. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो अच्छे बैक्टीरिया है उसके लिए खाने का रूप मतलब ये कार्यक्रम या फिर ये मतलब उसका काम करता है One thing about both Balance and Life Fiber एक चीज ये जो बैलेंस और लाइफ फाइबर की हम अगर चीज देखें तो is that we're not designing them as weight loss products, but because of their effect on metabolic health, weight loss is a side effect. क्योंकि ये ऐसा नहीं कि हम इसको वेट लॉस के ऊपर से हम डिजाइन किए हैं लेकिन इसका जो हम बोलते हैं कि इसने ये जो चीज हम खाने से या पीने से इसका जो मेटाबॉलिक हेल्थ के ऊपर जो असर होता है इसका साइड इफेक्ट वेट लॉस होता है So, yes, we should be working our best to eat as healthy as we can. हम लोग तो ये अल्टीमेटली देखा जाए तो हमें यही करना चाहिए कि हम जितना हेल्दी खाना खा सके वो खाएं पहले Ideally, we should be exercising as much as we can. आइडियली हमें अगर जितना हो सकता है हम एक्सरसाइज आपको करने से अच्छा है But most of you are like me. बहुत सारे लोग जो मेरी तरह है I can't do everything on my own. मैं बहुत कुछ अपने ऊपर से या फिर खुद से नहीं कर सकता हूँ Sometimes I need help getting to where I want to be. मैं कभी कभार शायद मेरे को मदद की जरूरत रहता है जहाँ पे मैं पहुंचना चाहता हूँ So every day I take my Unicity Balance मैं इसी की वजह से मैं यूनिवर्सिटी बैलेंस लेता हूँ because that helps me make sure that I'm going to be metabolically healthy every day. क्योंकि मेरे को पता है कि मैं वो लेने से मेटाबॉलिकली हेल्दी होऊंगा मैं उसकी वजह से मैं लेता हूँ Every day I take my Life Fiber मैं रोज अपना लाइफ फाइबर लेता हूँ because that's going to make sure that I'm feeding those bacteria in my stomach that I need to feed good healthy food. क्योंकि मेरे को ये पता है कि मैं अगर वो लाइफ फाइबर खाने से मेरे पेट के अंदर में जो हेल्दी बैक्टीरियाज हैं उनको मैं अच्छा खाना दे रहा हूँ और वो पॉपुलेशन बढ़ेंगे अच्छा खाना खाने से या फिर उनको अच्छा खाना मिलने से I want to mention one other thing that I've been thinking about during Dr. Kalpana's talk. मैं आपको एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ जो जब डॉक्टर कल्पना जी बात करे तो मेरे जहन में आ रहा था 70 to 80% of the Indian diet is from carbs. 70 से 80% जो हम लोग खाना खाते हैं वो कार्ब से है कार्बोहाइड्रेट से Switch out your lunch for LC base. अपना जो लंच है उसको आप
स्किप करके या फिर उसको रिप्लेस करके एलसी बेस से रिप्लेस कीजिएगा, जो अभी जो चल रहा है एलसी बेस। That's going to cut out a big chunk of those carbs. उससे बहुत बड़ा जो चंक ऑफ कार्ब्स जो हम खाते हैं वो आपको हट जाएगा। And that's going to give your body a break from that insulin. तो आपको उस समय पे आपको इंसुलिन से एक ब्रेक मिल जाएगा आपको, जब आप एलसी बेस लोगे। That's going to be one more tool to help you bridge the gap from where you are to where you want to be. वो आपके लिए बहुत बड़ा एक हथियार बनेगा, जहाँ पे हैं और जहाँ पहुँचना चाहते हैं। एलसी बेस एक बहुत बड़ा एक आपके लिए हथियार बनेगा। Now more than ever, we have a responsibility to share the knowledge that we have. पहले से आज हम मतलब हमारे ऊपर में यूनिवर्सिटी के जितने मेंबर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके ऊपर में उनके कंट्री के ऊपर में इतना बड़ा रिस्पांसिबिलिटी आ गया है। हम इस अपने जो संसार को हम और अब आगे हम कैसे अच्छा बनाएं, फिर इसको हम कैसे चेंज करें। Now more than ever, we should be sharing with our friends and our family these great Unicity products. आई थिंक अब ये समय आ गया है, पहले से भी ज्यादा अब हम और ज्यादा काम करें, हमारे लोगों को और आगे बढ़ाएं और हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट्स हर एक घर घर में पहुंचाएं। Now more than ever, we have an opportunity to change the world. पहले से भी अभी तक हमारे पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आ गया है हमारे इस दुनिया या फिर संसार को चेंज करने के लिए हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से। Thank you very much for listening. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको सुनने के लिए।